এইটো কৰিলে, এই কামটো কৰিলে, মানুহক কৰি দিলে হাতৰ পৰা 8 টকাৰ মানে কমিশ্যন এটা দিয়ে একাউণ্টৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। और मजीद कस्टमर से 100 रुपये वसूल किया जाता है। আৰু কাষ্টমাৰৰ পৰা সি এক্সট্ৰা টকাও পায়, লয়। সেইবিলাক আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়া কৰি যিটো পইচা ওলাই দিয়ে, তাৰ পৰা সি কাষ্টমাৰৰ পৰাও কিবা এটা পইচা পায়, 100 বা 50 টকা এনেকুৱা পইচা পায়। উস্কা লেনা কেইচা হে সুধি আছে, এইটো লোৱা জায়েজ আছে না নাই। ফোন পে, গুগল পে वगैरह से कस्टमर पैसे भेजते हैं। কেতিয়াবা কি কৰে, ফোন পে বা তো গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰে, সেই পইচাটো কাষ্টমাৰক পঠিয়ায় বা কাষ্টমাৰক কেছ দিয়ে। কাষ্টমাৰে কি কৰে, তাত দি দিয়ে गूगल पे। और कैश लेते हैं, उस पर भी 1000 में 10 रुपये के हिसाब से वसूल किया जाता है। যদি 1000 টকা কাৰোবাক কেছ দিয়ে বা 1000 টকা কেছ দিলে, তাৰ পৰা 10 টকা কমিশ্যন লয় সেই দোকানীয়ে। जिस पर कंपनी कोई कमीशन नहीं देती है। कंपनी এইটো একো কমিশ্যন নিদিয়ে। उसका लेना कैसा है, এইটো লোৱা কেনেকুৱা, জায়েজ আছে না নাই। उसी तरह फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से कस्टमर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैश देते हैं। সেইটোৱে কৈ আছে যে কেতিয়াবা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে এক জেগাৰ পৰা আৰু এক জেগাত, মানে পঠাব যায় মানুহে, তাৰ পৰা কি কৰে, ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে আৰু কেছ দিয়ে। কেতিয়াবা ऑनलाइन पैसा থাকিলে कैश दिए। उस पर 1000 में 5 रुपये के हिसाब से वसूल किया जाता है। 1000 দিলে 5 টকা লয়। जिस पर कंपनी कोई कमीशन नहीं देती है, ইয়াত কোম্পানী কোনো কমিশ্যন নিদিয়ে, তাৰ পৰা 5 টকা লয়। আৰু যোনে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব কয় বা কেছ লয়, তাৰ পৰা 5 টকা 10 টকা লয়। उसका लेना कैसा है, এইটো জায়েজ আছে না নাই। মোবাইল ৰিচাৰ্জ करना जिसमें कंपनी 4 से 6% কমিশ্যন के तौर पर देती है। কেতিয়াবা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোঁ, যেনেকৈ আমি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোঁ দোকানীৰ পৰা, এই দোকানীক কি কৰে কোম্পানী 4 বা 6 টকা তাক কি কৰে, কমিশ্যন দিয়ে। उसका लेना कैसा है, এইটো জায়েজ আছে না নাই। লোন পে ফোন দেনা, কেতিয়াবা কি কৰে, কিস্তিত মোবাইল ফোন বিক্ৰী কৰে। मेरे पास বাজাজ কোম্পানী का एक कार्ड है। সেই মানুহটোৰ ওচৰত এটা বাজাজ কোম্পানীৰ এটা কাৰ্ড আছে, जिससे फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आशिया लोन पर मिलता है। সেই কাৰ্ডৰ জৰিয়া কৰি কিবা মোবাইল বা ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু এইবিলাক কি কৰে, আপোনাৰ মানে লোনৰ হিচাপত দিয়ে। जिसमें कंपनी 6 से 300 रुपये जायद लेती है। এইটো দিলে কোম্পানী কি কৰে, কোম্পানী 200 পৰা 300লৈকে বেছি লয়। जिसकी सारी किस्तें मेरे अकाउंट से काटते हैं। সেইবিলাক যিবিলাক কিস্তি কাটে, সেই মানুহজনৰ একাউণ্টৰ পৰা কিস্তিটো কাটি লৈ যায়। जिसकी वजह से কাষ্টমাৰ से बोलकर 1000 रुपये वसूल करता हूँ। কাষ্টমাৰক কৈ পিনে 200 বা 300 200 বা 300 টকা কোম্পানীৰ পৰা কোম্পানীয়ে লয়, আৰু যোনে মোবাইল দিয়ে সি 1000 1500 এনেকুৱা টকা কি কৰে, সি উচুল কৰে, তাৰ পৰা লয় কমিশ্যন। ধৰি লওক 1000 টকা ল'লে, কোম্পানীয়ে 300 টকা ল'লে, সি পালে 700 টকা, তেনেকুৱা। रेलवे टिकट बनाना, কেতিয়াবা ৰেলৰ টিকট বনায়, जिसमें कंपनी फ़ी टिकट जनरल में 10 से 12 रुपये, रिजर्वेशन में 15 से 20 रुपये। কেতিয়াবা টিকেট কাটি দিয়ে ট্ৰেইনৰ, জেনেৰেলৰ টিকট কাটিলে 10 টকাৰ পৰা 12 টকা পায়, আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ টিকট যদি কাটি দিয়ে 15 পৰা 20 টকা পায়। उसी में 25 से 30 रुपये कमीशन देती है। তাতে 25 टका पर 30 टका कमीशन पाए। उस पर कस्टमर से जनरल का 30 रुपये, रिजर्वेशन का 50 रुपये और एसी का 100 रुपये 100 रुपये वसूल किया जाता है। তেখেতসকলে যোনে টিকেট কাটি দিয়ে, কেতিয়াবা কি কৰে, জেনেৰেল যোনে টিকেট কাটে তাৰ পৰা 30 টকা লয় মানুহৰ পৰা। কোম্পানীতো কমিশ্যন দিয়েই, কিন্তু মানুহৰ পৰা আকৌ 30 টকা বা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত 50 টকা লয় বা এচিৰ 100 টকা লয় বেছিকৈ। उसका लेना कैसा है, तकरीबन 2 सालों से मेरी दुकान एक गांव में है, जहाँ से बैंक 5 किलोमीटर के फासले पर है। কৈ আছে যে মোৰ দোকানটো
दुकान एक गांव में है এটা গাঁৱত আছে जहाँ से बैंक 5 किलोमीटर के फासले पर है तारপৰা দূৰত बैंक 5 किलोमीटर দূৰত আছে उस इलाके में एक ही बैंक है সেই इलाकाটোত সেই गाँवটোত কি এটাই बैंक আছে जिसकी वजह से बैंक में काफ़ी भीड़ होती है এটা হোৱাৰ কাৰণে बैंक कम হোৱাৰ কাৰণে पूरा भीड़ লাগি থাকে काफ़ी वक्त लगता है बहुत समय लगे तब जाके बैंक में कोई काम होता है মানে বহুত ঝামেলা হয় বেংকৰ পৰা পইচা উঠোৱা বা আনা নিয়া এইবিলাক মানে বহুত মানুহ ভিৰ হৈ থাকে এটাই বেংক গতিকে हत्ता कि मुझे भी जब कैश की ज़रूरत पड़ती है तो लाइन में रहना पड़ता है যদি মোৰো কেতিয়াবা গৈ কেছ আনিব লাগে বেংকৰ পৰা তেতিয়া মোৰো কি কৰিব লাগে लाइनत ठिया হ'ব লাগে उसी वजह से लोग जाने के बजाय मेरी ही दुकान से कारोबार करते हैं সেইকাৰণে ভিৰ ভাৰৰ কাৰণে মানুহে কি কৰে ওচৰত পাই তাৰ পৰাই কি কৰে কাৰোবাৰ কৰে তাৰ পৰাই লয় जो उस वजूद उस बावजूद उसके कि मेरी दुकान में जायद पैसे देने पड़ते हैं যদিও বেশি পয়সা দিব লাগে তার পৰাই লয় कारण उसके उन सब के बावजूद गांव के लोग खुश है पैसा दियार पाছতো মানুহে ভাল পায় কিহৰ কাৰণে पैसे लगते हैं खुश है कि पैसे लगते हैं पर वक्त और परेशानी से बचते हैं কৈ আছে যে আমাৰ সময়টো বা আৰু ইমান পেৰেচানি ইমান ঝামেলা তাৰ পৰা বাচো সেই কাৰণে ভাল পায় গাঁৱৰ মানুহে তাৰ পৰাই কি কৰে কাৰোবাৰ কৰে जब से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक ठाक चल रहा है যেতিয়াৰ পৰা मैं काम কৰি আছোঁ अल्लाह মোক ধুনীয়াকৈ চলাই আছে पर दिल मुतमईन नहीं लग रहा है कि पता नहीं जो काम मैं कर रहा हूँ वो शरान जायज़ भी है या नहीं কৈ আছে যে মই যিটো কাম কৰি আছোঁ এইটো জায়েজ হয় না নহয় মোৰ খলত মলত লাগি আছে মোৰ ভাল লগা নাই কামটো কৰি আছোঁ এতিয়া যদি জানিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহে মোৰ দিলত এটা চকুন আহিলেহেঁতেন শান্তি আহিলেহেঁতেন वो शरान जायज़ है जायज़ भी है या नहीं अगर नहीं तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए যদি জায়েজ নাই তেনেকুৱা जायज़र सूरत की কেনেকুৱা কৰিলে জায়েজ হ'ব बराए करम मंदरजा बाला के मसला पर गौर व फिक्र करके नाचिस को मुत्तले फरमाइए और लिखने में कुछ कमी बेशी हो तो माफ़ फरमाए अच्छा আহক এতিয়া আমি उत्तरটো চাই লওঁ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नंबर 1 पैसे अकाउंट में मंगवाकर कस्टमर को देने और उस पर उजरत लेने की गुंजाइश है তাৰুণ দেৱন্তে ফতোৱা দিছে যে আপুনি जेनेकुआ अकाउंट में मंगवा कर कस्टमर को देने और उस पर उजरत लेने की गुंजाइश है এইটোতো জায়েজ আছে যে আপুনি পইচা মোবাইলত আনি কাস্টমাৰক দিয়া বা তাৰ পৰা উজৰত লোৱা এইটো আপোনাৰ কাৰণে জায়েজ আছে কৰিব পাৰে और कंपनी बतौर कमीशन जो रकम दे उसका लेना भी दुरुस्त है 2-3 टका 5 टका 10 टका जिमाने दिए कंपनी लोआटू जायज़ है नंबर 2 गूगल पे और फ़ोन पे ऐप के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र करने की सूरत में जो मज़ीद रकम ली जाती है अगर ट्रांसफ़र करने वाला मेहनत और वक्त सर्फ करे যদি ট্রান্সফার যোনে গুগল পে ফোন পে ট্রান্সফার करे যদি অলপ मेहनत करे বা সময় লাগে তেতিয়াহ'লে वो अजीर बनकर अपने अमल की तयशुदा उजरत उसूल करे तो उसके लिए मज़ीद रकम लेना शरान जायज़ है ता ही কি কৰিব পাৰিব पैसा लोग पारिब একো নাই তার কারণে जायज़ আছে मोबाइल रिचार्ज करने पर कंपनी 4 से 6% जो कमीशन देती है उसकी हैसियत तबर इनाम की है उसके लेने में कोई मुजायका नहीं मोबाइल रिचार्ज करिले जेटू पैसा পোৱা যায় हेटू लोआटू की जायज़ আছে একো নাই आप अगर कंपनी से मसलन एक मोबाइल 10,300 में ख़रीदते हैं और फिर उस मोबाइल को 11,000 का बेच देते हैं যদি আপুনি 10ৰ পৰা 10,500 আপুনি লয় বা 10,300 টকা 400 টকাত লয় আৰু যদি হেতু 11,000 বেছি দিয়ে তো ফি নফসি বয় জায়েজ এটু জায়েজ আছে 10,300 में खरीदते हैं और फिर उस मोबाइल को 11,000 का बेच देते हैं 700 টকা আপোনাৰ লাভ হৈছে তো ফি নফসি বয় জায়েজ এনেকুৱা বেচা কিনা কৰা জায়েজ আছে ইয়াত একো नुकसान नहीं लेकिन अगर मामला की नीयत कुछ और हो यदि अपनी এনেকুৱা নহয় बेलेग सिस्टम হয় तो उसको साफ और वाज़ेह तौर पर लिखे ধুনীয়াকৈ লিখিব দিছে ले सकते हैं বন্ধুসকল আশা কৰোঁ বুজি পাইছে এইবিলাক জায়েজ আছে যিবিলাক কম্পিউটাৰত মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে গুগল পে কৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰে ডিপোজিট কৰে এইবিলাক কৰাটো জায়েজ আছে আপোনাৰ কাৰণে আশা কৰোঁ বুজি পালোঁ আপোনালোকে বুজি পালে দোয়া কৰিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।